Yes. So good evening, everyone. So we are coming with our second day session, that is the bond of love. So myself, CA Gaurav Chaudhary from Surat. So I just like to do the small introduction of our today's faculty. So it gives me immense pleasure. CA Goswami ji. So I just read a small introduction. So he's a chartered accountant as well as an author and internationally acclaimed motivational speaker, a life reinvention coach, and a social activist. He is a certified master practitioner of NLP from UK. He was conferred with international training fellowship by Junior Chamber International USA and become eighth proud Indian training have a tag of international training fellow. He conduct NLP practitioners workshop across India and in Nepal. Besides that, he conducts workshop on leadership, business excellence, train the trainers, public speaking, students empowerment, and etc. During last 20 years, he has mentored and influenced lives of more than 50,000 persons across the globe through his seminars, training workshop, speeches, and counseling. He has traveled more than 30 countries for social and training commitments. So without wasting any time, I just hand over the mic to CA Preetham sir. So please. Thank you, Gauravji. It was again pleasure to have you as a moderator on day two. I would like to tell all the audience who are attending this workshop. Yesterday, we spoke about the power of thinking, how scientifically you can control and direct your thinking to your advantage. Today, it's a very interesting topic. We are talking about the relationship. And next, almost 90, 95 minutes or 100 minutes, we'll be speaking about it in detail with all practical experiences of mine or around me and how it can help you in your professional life, personal life, family life, and social life at large. So also be focusing on our professional life because that's very important because relationship affects all of us in every sphere of our life. Now, I request all the participants and audience to please keep your queries posted in the chat box and we'll be spending some 15-20 minutes at the end. Like 5:30 we'll be finishing our session, and from 5:30 to 5:45 or 5:50 we'll be taking up all your questions. And let's start. What is mean by bond of love? Like we have come into an era where the most of things are being done using machines or artificial intelligence, but still we need people around us. We cannot replace people. You cannot replace our parents. We cannot replace our colleagues. Even during COVID times, people working from home using the machines, best of the machines, but still who is working there? People who are working there. So it is still important for us to maintain those healthy and good, strong relationship. Uh, you must have heard about Helen Keller and what she said. The best and the most beautiful thing in the world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart. And my dear friends, emotions, relationships, beauty of relationship, you cannot define them. You cannot tell them that how much concern I have for you, how much care and warmth I have for you. You can not tangibly define it. You cannot quantify it, but yes, you can feel it. If somebody cares for you, you can certainly feel it. You cannot quantify it. You cannot count it, or you cannot say that 75% on the scale of 100%, 60%. So of course, if I feel genuinely for somebody, that somebody has a genuine concern for me, genuine care for me, genuine interest or feelings for me, I can feel it. And you cannot fake it. You can fake it for a few days, but you cannot fake it for a longer period of time. So we can feel it definitely. Now, the question comes, we are sitting in an era that most of the tasks are being done by machines using artificial intelligence. And in the years to come, you will see more role being played by AI
in our lives. We have seen it in accounting field, we have seen in customer relationship field, we have in banking, and everywhere we are seeing it. But still, we need relationship. And my dear friends, reasons of relationship are still the same which were there a few years ago, or a few decades ago, or a couple of centuries ago. We still need them. And why do we need the relationship, my dear friends? Very simple reason: to feel that I am accepted. Whatever is my thought process, whatever are my beliefs and principles, I want to confirm it. And when I am accepted by the society, or by my family, or by my colleagues in the office, I feel good from inside. If there's no one to accept me, and if people do not accept me, I do not like that. So I want people to accept me. I want to feel important as a human being, irrespective of caste, creed, culture, and qualification I have. I want to feel important. And who makes me feel important? My own people, my colleagues in the staff, my juniors in the office, my subordinate in the company, my own kids, my own siblings, my parents, my spouse. They make me feel important. और जब वो आपको important feel करवाते हैं, तो आपको एक एहसास होता है that you are somebody. एक एहसास होता है I am nobody, but your relationship, the way you matter for all of them, makes you feel yes, you matter to somebody's life, you are important to somebody, and that give a different kind of happiness. And then happiness gives you a purpose to live in this world. Third thing, love is an emotion which is an integral part of our life, not only of the human life, but also the life of an animal. It's an integral part. And if you remove the love part, affection part from anybody's life, the life becomes as if a body without soul. It carries no meaning. So to feel loved, whether it's a love of my mom, or love of my friend, or love of my spouse, or love of my kids, but yes, to be loved by another person. You know what happens when you feel low, depressed? You need somebody to give you the company. So you stop being lonely. Yes, last night I started reading a book. And then I was also reading a research of Harvard. The major trouble in the whole world, fortunately, we are living in India, and here the problem of loneliness is less. If you talk about England, specifically London, a majority of youngsters are living single or alone. And you can understand their psychology and their state of their mind. If I'm feeling bored, I need somebody to interact with. अब वो interaction चाहे इंस्टा पे करे, या फेसबुक पे करे, या कॉल पे करे, व्हाट्सएप पे करे, फेस टू फेस करे, वीकेंड पार्टी में करे, बट वी नीड. और अगर ऑफिस में भी हम काम कर रहे हैं, तो लंच टाइम तक थोड़ा सा माहौल बदलने के लिए we need to talk to people, and we feel good, we feel refreshed, we feel recharged. To share my problem, I need people. That doesn't mean I want people to solve my problem, but if I'm carrying a burden on my heart and mind, and if I tell that problem or challenge to my friend or my family member, I feel relaxed. I do not want you to solve my problem, I just want you to listen with empathy, with intent. Similarly, for happiness, my happiness carries no purpose if I can't share that happiness. I take a hypothetical example. Suppose Gauravji gets a phone call from Mr. Amitabh Bachchan, and Mr. Amitabh Bachchan invites him to meet him personally for a lunch or dinner. But he puts a condition that while being on dinner, you can't click any picture or selfie. Okay. Condition number 2, that you cannot tell about this incidents that you met me to anybody. Okay. But you can come and spend as much as time you want to spend with me. Now tell me, Gauravji, are you going to feel happy about it? Meeting Amitabh Bachchan is not a big happiness. What gives you more happiness when you post a picture on Facebook? When you click a picture and frame it and put it in your bedroom or drawing room or in your office?
or you tell it to your friends and colleagues that, oh, I met Mr. Amitabh Bachchan. So the real happiness is in sharing. Okay, so why I need people friend around me to share my experiences or my happiness. Say your elder brother, Mr. Abhishek, is in UK right now. He's having all good experiences over there. So when he comes back, he would love to share those experiences to you and other people. And if he's not allowed to share those experiences, he will not feel good about it, as if that didn't give him true happiness. And of course, one major reason for the relationship, to help others and to get that help when we need it. So it's a mutual concern. When we say it's an unconditional relationship, okay, a relationship could be unconditional, but of course, in the time of difficulties, we accept our loved ones, our colleagues, our friends, members of our society to help us, and they also seek our help as and when they need it. So these are the basic reasons why do we need relationship. But my dear friends, let me tell you a bitter truth. And the bitter truth is, if you go 30 years back, 35 years back, whatever automation we had in last 35 years, whatever home appliances and office appliances we got, whatever artificial intelligence, software, laptop, machines, those came to our lives to help us. We got washing machine to help us. But what happened? A human being, after getting so much of domestic and office help from the machine and artificial intelligence, a human being must have got free, and he must have spent, or she must have spent more time with the family and the society, but it hasn't happened. At the same time, the technology also gave us the Instagram and the Facebook and WhatsApp. So all our free time is going into that. And trust me, my dear friends, other day I was taking a class on anxiety and depression, because I specialize, that's my passion, and I specialize in that also. And trust me, 33% of people go through anxiety at least once in their lifetimes. In Indian society, we have taboos that we do not accept that I am having anxiety or I am having depression. But trust me, one out of every three persons are suffering from depression for some time. And relationship is one of the major reasons. Relationship is one of the major reasons. There are two major reasons. Number one is relationship. Number two is the scarcity of money. That is, and the third, sometime, that is your relations related to your health. But the foremost reason of stress, anxiety, and depression is relationship, bad relationships. Because I told you that's my passion, and I love helping people. And on Sundays, when I'm free from my profession, I do seminars, I meet people. A lot of people contact me online or offline for the various kind of helps related to relationships or something like that. And I tell you, most people are struggling with that. और एक और बात मैं आपसे यहाँ बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब से हम पैदा हुए और आज तक, we are grown ups, we are running our own profession, we are having we are dealing with hundreds of clients. But trust me, tell me, right from the class nursery to till you pass your CF finals, how many time in the school or colleges you were taught about relationships and how to be good at interpersonal skills? Okay, in orientation seminars or GMCs, some couple of sessions are taken, but we were not fortunate enough because we did not never attended those GMCs classes. But do you think that that's enough? And that's the reason we should not think that I'm the expert at making relationship. You could find somebody who's not literate, not well educated. You can find that person good at relationship. That's nothing to do with your qualification, my dear friends. There are so many other things. So if you are going through a bad relationship, then what causes stress. And if stress is not handled properly, when it increases, it gets converted into anxiety, and prolonged anxiety later on turns into depression, and that's pretty difficult thing to come out of. And that also results in that stress, anxiety, and depression results in various kind of heart diseases, loss of zeal and excitement. And due to that bad relationship, you find
as if, if your loved ones are not talking to you properly, or if you have conflict with your partners, with your parents, or with your spouse, you think that as if there's no purpose in your life. You are not excited about life anymore. People start having suicidal tendency. And also, of course, isolation. People tend to go into isolation. So these are the loss of productivity is also one of the reasons. And if somebody of my office comes to office and I find that person not to be that productive, the basic reason that comes, that that person might have had a bad fight at home, and that carry that fight to office, and it disrupts their office life. And similarly, conflicts within the office, they are carried to home, and you are feeling disturbed at home as well. Now, let me talk about present times. What are the challenges which we face right now? As I told a few whiles ago, because of these electronic gadgets, because of the pressures on us, we are too much of occupied. Even if we are free, we are mentally occupied because of this element called mobile. Then digital media, I told you that it is keeping us occupied. People, before going to sleep, check their mobile. After waking up, most of the people, the first thing they do is they check their mobile. If you're asked to keep your mobile on a silent mode in a meeting, the moment meeting gets over, the first thing you'll do, you'll ask for a glass of water later, but first you're going to check your mobile for the first. The competition, why this pressure is created, why we are having too much of occupancy, because the world is growing faster than our expectation. There is a lot of competition, there's a lot of pressure, whether you're working for a corporate, whether you're in your own practice. So competition is all around, and that is pressurizing us to do more, to get mentally occupied more. And that is the reason we are not able to give ample or proper time to our people. Impatience and this mental disturbance in our mind, this ongoing mental occupancy keeps our mind occupying, and that's why we are getting impatience. And impatience resulting in, if I expect something from you, you should do it right and there. If I'm calling you, if you're not picking the call, I expect you to call me as early as possible. If I'm posting you a text on the WhatsApp, I expect you to reply me, respond me instantly. And these are the expectation causing the impatience. And किसी के पास भी टाइम नहीं है फ्रेंड्स, आप भी बिजी हो तो सामने वाला भी बिजी है. तो ये चैलेंजेस आ रहे हैं, और इस मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशंस की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है. और अगर हम बात करें, there are you are at the center of this entire circle, and look at what kind of relationship we are required to make. Look at the kind of expectations people have from you. Your parents have different expectation, you need to give time to them. Your kids also have expectations from you. हालांकि अभी दुनिया बदल रही है, जमाना बदल रहा है. किड्स को आपका क्वालिटी टाइम नहीं चाहिए, उनको तो उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करनी है. और एक पेरेंटिंग सेमिनार में मैंने बहुत क्लियरली कहा, जो मैं आज महसूस करता हूं, बिकॉज आई डू लॉट ऑफ काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स एंड किड्स. ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, आज की तारीख में किड्स के लिए पेरेंट्स सिर्फ एक एटीएम कार्ड्स हैं. जब तक आप उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करते हो, वो आपको सुनते हैं, आपको अच्छा पेरेंट्स मानते हैं. आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके फ्रेंड्स, आप अगर अनमैरिड हैं तो आप किसी रिलेशनशिप में, वो वाला रिलेशनशिप. आप मैरिड हैं तो आपका स्पाउस वाला रिलेशनशिप. अदर्स में बहुत सारा आता है, बिकॉज 40% ऑफ योर टाइम यू आर स्पेंडिंग एट योर वर्क प्लेस. एंड इफ यू नो हाउ टू मेंटेन, create relationship, how to nurture them, how to maintain them, you can create a good network of people. So I'm talking the workplace now. A workplace पे relationship with your office people, your seniors, your juniors, your colleagues. तीन लेयर है वहां पर भी, और तीनों के लिए अलग अलग तरीका है रिलेशनशिप मेंटेन करने का. आपके सीनियर्स, आपके सबॉर्डिनेट्स, और आपके कलीग्स. फिर बारी आती है आपके कस्टमर्स या आपके क्लाइंट्स की. फिर बारी आती है आपके वेंडर्स की. सो देयर आर bunch of people at workplace, because remember 40% of your life you're spending at your workplace. And if you are problem with your temperament, emotions, reactions, your skills related to handling relationship,
अगर उसमें कोई गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो घर पे तो हो ही रहा है जो प्रॉब्लम हो रहा है, workplace पे it is going to happen. And when I go to corporates to conduct seminars, I find a lot of companies are requesting me to organize sessions on conflict resolution or team building or leadership, and they all comprise one skill which is required to be inculcated, that is relationship skills. And others में एक और चीज आती है, that is relationship with your with the society in general. Like, I am very active in Rotary Club. I was very active at branch level of ICAI. I was chairman a couple of decades ago at Kota branch of ICAI. I'm also involved in other organizations similar to Rotary, like JCI. Now, where you meet people, like I am the president-elect of Rotary Club, which is the second largest club of India, having 450 members. As a president, when I serve my tenure, I am required to deal with 50 people who are board members and other 400 people who are normal members. So we need relationship skills as well. So if I have certain problems with my behavior and temperament, I'm going to upset so many of them. If I know how to connect with people, how to make friends, how to create that bond, how to create that warmth, how to resolve that conflict, of course, I'll be remembered for years to come, and I'll be able to create a good amount of network. And I tell you, I was very socially active for last 20 years in Rotary and in JCI, Junior Chamber International. And trust me, my dear friends, 60 or 70% of my client base, I'm a practicing chartered accountant, is because of these social organizations. Doesn't mean that just by joining the social organization, because it's a networking you are doing. You're meeting people, you're impressing them, you're creating relationship, you are talking to them, you are helping them in tough time. So people get impressed with your personality, with the way you talk to them, the way you take care of them, and they themselves approach. And I told you that 70% of my client base created in last couple of decades, last 20 years, is because of those couple of social organizations where I was active. And let me tell you one more thing, that I never asked anybody, requested anybody to give me any assignment of work. They themselves came to me, seeing my trustworthiness, seeing my behavior in the society. This is how it is important. So जितना relationship आपके personal और social life में important है, उतना workplace पे भी important है. तो यहाँ सब चीजों को balance करना है. और मैं ये कहता हूँ कि आप दो जगह अलग अलग इंसान हो ही नहीं सकते दोस्तों. यू आर वन एंड सेम पर्सन. तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिलेशनशिप में घर पे तो बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन वर्क प्लेस पे आर नॉट एबल टू हैंडल योर रिलेशनशिप, या वाइस वर्सा. Socially you're very active, you have the acceptability among people, you take care of people. It is your general temperament. If you have that attitude of caring, if you have that attitude of appreciating, if you have that attitude to criticize people, it will continue everywhere. आप घर पे होंगे तो भी वही एग्जिबिट करेंगे, ऑफिस में होगी वही, यू आर वन एंड सेम पर्सन. सो दैट्स व्हाई आप ये मत सोचिए कि हाँ आप कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं वर्क प्लेस पे तो घर जाके नहीं करेंगे. दैट बिकम्स योर सबकॉन्शियस पैटर्न, सबकॉन्शियस बिहेवियर. आप कहीं जाएंगे, उसलिए आप देखोगे अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिनको लोगों की बुराई करने में, बिचिंग करने में, बैकबाइटिंग करने में, क्रिटिसिज्म करने में बड़ा मजा आता है. और अक्सर आप उनको देखेंगे कि दे नेवर अप्रिशिएट पीपल, they never notice good thing in people. Wherever they go, they love criticizing, because this becomes their general behavior and general habit. So if we talk about the relationship, there are 5 major attributes which make a relationship a worthy one. Number 1, communication. Communication is a soul of a relationship. If you talk to people, quite often you stay alive in their mind. They will not complain. Even if you talk to, I was with my client last month. He's a new client to me, and he's still continuing with his old chartered accountant. So it's a group of companies, and he was not unhappy with his CA in terms of professional work and all, but he said that
my CA has not visited my office for last 10 years. मैंने कहा कभी आपने बुलाया कि नहीं, बुलाने की क्या जरूरत है, कभी वो मिलने तो आ सकते हैं। वो कभी मुझसे फोन पे बात नहीं करते, कोई बहुत जरूरत होती है ऑफिस के काम की तो बात करते हैं। एंड ही इज विद मी फॉर लास्ट 1 year and he said कि the best part of you is without any purpose you make sure that you meet me once in a month without any purpose. Generally I have my senior partner Mr. Anil Jain told me or taught me how to keep that warmth alive with your clients. Okay, so I've categorized my clients into 4 categories depending on various priority. देखो prioritize तो करना पड़ता है आपको। तो मैं Saturday generally I do not sit in the office. The only thing I do is Saturday I go to at least 4 or 5 clients without any specific agenda and purpose. Okay, and this way I make sure that I meet at least 25-30 clients in a month. If I have say 50 or 60 or 100 clients and I have a plan to meet my A or B category client because वो client generally office नहीं आते हैं, तो आज आप कर क्या रहे हो? You are just in communication with them. ऑडिट के टाइम पे या किसी हेयरिंग के टाइम पे मिलना वो कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो कम्युनिकेशन जब तक आपका ऑनगोइंग और कंटिन्यूइंग रहेगा, आपकी रिलेशनशिप हमेशा स्ट्रेंथनिंग रहेगी, आप हमेशा लोगों के थिंकिंग में रहोगे, आप उनकी थिंकिंग से बाहर नहीं जाओगे। ओके, नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग. व्हाट डू वी मीन बाय अंडरस्टैंडिंग? Understanding other party's emotions, feelings, same way the other person is feeling. What we expect in a relationship, whether it's with your client or your boss or your spouse or your friend, that the other person should first understand me. They should understand my emotion. They should understand my bad or good feeling when I felt good or bad. But my dear friends, do we try to do the same thing? And that's why I say first understand others and then seek to be understood. पहले आप दूसरे को समझिए तो सही, आप दूसरे की भावनाओं को, उसके इमोशंस को, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसके गुड्स एंड बैड चीजों को समझेंगे तो सामने वाला भी आपको डेफिनेटली समझेगा। तीसरी चीज जो रिलेशनशिप में बहुत मैटर करती है वो है फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टिंग। देखिए, दो लोग एक जैसा नहीं सोच सकते। आपके बॉस का काम करने का तरीका है, आपका काम करने का तरीका डिफरेंट है, आपके कलीग का काम करने का तरीका और डिफरेंट है, हमारे सबके पॉलिटिकल रिलीजियस बिलीफ डिफरेंट है, हमारे खाने की चॉइस डिफरेंट है, बट how you adapt yourself to that environment, how you become flexible to get adjusted. If you stay rigid, no, I do not compromise on my choices to eat or my other choices. So my dear friends, if you can't accommodate yourself, then you can't accommodate that relationship as well. तो flexibility होनी चाहिए, उस rigidity को निकालना पड़ेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट है बिलीफ। मुझे कई लोग मिलते हैं, ऐसे लोगों की तादाद कम है। Oh, I don't trust people. You know, when I go to seminar, I ask few questions which are debatable. I generally trust people. I generally do not trust people. So in every seminar, I find 15-20% of the people who will say, I generally don't trust people. People are not trustworthy. Now they have created that belief. Whenever they meet new people, they will look at that person with a sense of doubt, sense of suspicion. So that's their belief. I also ask a question specifically in my leadership and team building seminars, and I ask people to comment on that. It's very difficult to make people work hard. लोगों से काम करवाना, मेहनत करवाना बहुत मुश्किल काम है, और वही 15-20% लोगों का मानना होता है, yes, people do not want to work. It's so difficult to get people making people work hard. Again, this is belief system, my dear friends. If I have a belief that if I am a good leader, if I can inspire people to work, people can work hard, you know, and that's the reason I tell you, because a lot of chartered accountants are listening to me. Many times my office people, specifically articles, they come and say,
सर काम बहुत है, संडे को ऑफिस ओपन करिए ना। मैंने कहा यार संडे तो रेस्ट करिए। नहीं नहीं सर, संडे को मन नहीं लगता घर पे, आप तो ऑफिस खोलिए, हमारा काम भी फिनिश होगा। यू नो दैट हैपन, नॉट वन टाइम, plenty of time that has happened. And sometime when I see my watch, it's 7:30 and still I see a few people are working, and I come out and tell भाई बहुत लेट हो गया जाओ, and they say सर बस फिनिश करके जा रहे हैं। मैंने कहा नो, यू कैन फिनिश इट, आपको मिलेगा क्या ऐसा? I'm not asking that I am a superhuman, but I address every small things where they feel good or bad. I know how to win their hearts. And once you win the heart of people, they can sacrifice their lives for you, my dear friends. People work for money, there's no doubt about that. But more than money, they also work for something else. I have seen people leaving their jobs not because of low salary, but because of bad behavior of the boss or conflict with their colleagues. And that's why we need to change this belief. People can work. You need to win their hearts. तो ये बिलीफ और परसेप्शन अगर आपको चेक करना पड़ेगा कि रिलेशनशिप में ऐसा कोई बिलीफ है क्या आपका, जो आप कहते हो कि लोगों को ट्रस्ट नहीं कर सकते, लोग बहुत आजकल ट्रस्ट लायक नहीं रहे, लोग मेहनत नहीं करते, लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, काम नहीं। ये सब हमारा बिलीफ है। हमको सब तरह के लोग मिलेंगे इस दुनिया में, बट मैं फिर ये कहता हूं कि आपको वैसे लोग ज्यादा मिलेंगे जैसे आप हो। आपको महाभारत की वो स्टोरी मालूम है ना, कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन और दुर्योधन को कहा कि आप सर्वे करने के लिए जाइए और जाइए कि आपको कितने लोग अच्छे मिलते हैं और कितने लोग बुरे मिलते हैं। तो सबसे पहले दुर्योधन इम्पेशेंट था, जानते हैं, वो गया, 2-3 घंटे में वापस आता है और आके गुरुजी को बोलता है, गुरुजी क्या बकवास काम दे दिया आपने, एक भी ढंग का इंसान नहीं मिला, सब बदमाश, सब कामचोर, सब बेवकूफ। एंड थोड़ी देर के बाद अर्जुन आते हैं और अर्जुन आके बोलते हैं कि सर थैंक्स फॉर मेकिंग मी मीट सो मेनी गुड पीपल, सो मेनी ब्यूटीफुल सोल्स, एंड आई कुड लर्न फ्रॉम एवरीथिंग। इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, वो बहुत सीधे लोग थे, बहुत भोले लोग थे, हर इंसान से कुछ ना कुछ मैंने सीखा, बड़े प्यार से उन्होंने मुझे हैंडल किया। तो मैं क्या कहता हूँ कि इफ यू आर सीइंग अ बैड पर्सन, कहीं ये देख लीजिए कहीं हमारी मिरर इमेज तो नहीं है, कहीं हम उसको अट्रैक्ट तो नहीं कर रहे, क्योंकि यू अट्रैक्ट likes. So this is your perception. So these are the 5 important attributes of a relationship. Now let us see what are the reasons of bad relationship. क्यों ऐसा होता है कि relationship में problems आते हैं? सबसे बड़ी चीज है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज का मतलब मेरा यहाँ नहीं है कि इंग्लिश या मलयालम या तमिल। लैंग्वेज का मतलब है हम किस तरह की भाषा का इस्तेमाल अपने लोगों से करते हैं। मैंने ऑफिसेज में देखा है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि मैं जीएमसीएस की क्लासेस लेता हूँ, ओरिएंटेशन की लेता हूँ सी इंस्टीट्यूट में, और आर्टिकल्स आके लिटरली अपने बॉसेस के बारे में, अपने एम्प्लॉयर के बारे में जो बोलते हैं, सुन करके लगता है कि आर वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी एक्सपेक्ट देम टू बी सुपर ह्यूमन, बट what is the behavior of mine if I am holding a certificate of practice and running an office with 50 people doesn't give me a authority or license to misbehave or talk in a rash language. It doesn't give me that. So even बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए कि सर इसने 12th कर रहा है, कॉमर्स में है, तो इसको क्या करना चाहिए। और वो पेरेंट्स वही बोलते हैं सर ये पढ़ने में बहुत कमजोर है, तो सीए तो ये नहीं कर पाएगा। व्हाट लैंग्वेज वी आर यूजिंग? बच्चों को क्या बोलते हैं हम? तुम बेवकूफ हो, तुमसे जरा सा नहीं हो सकता, यू कांट डू दिस, इतना जरा सा काम नहीं कर सकते। मतलब समझ लीजिए एक रिलेशनशिप जो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, पेरेंट चाइल्ड का हो, बॉस और एम्प्लॉय का हो, द वन मेजर रीजन फॉर गुड और बैड रिलेशनशिप इज योर लैंग्वेज। बिकॉज बिहेवियर की बात करते हैं ना, उसका व्यवहार बहुत गंदा है। What do we mean by behavior? Behavior is reflected through your language, how you are speaking to that person. The second reason is taking other person for granted. और पर्सनल रिलेशनशिप में ऐसा होता है, इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे कि why do we take मेरे ऑफिस में एक लड़का था और इतना डेडिकेटेड
और कोई बहुत हाई पेड स्टाफ नहीं था, मॉडरेटली पेड स्टाफ था, और मेरा वो फील्ड का काम करता था, इनकम टैक्स जाना, बैंक जाना, मेरे घर जाना, इस क्लाइंट के जाना, बिकॉज आई कम फ्रॉम सिटी ऑफ कोटा विच इज अ मीडियम साइज सिटी विद पॉपुलेशन ऑफ 15 lakhs. सो डिस्टेंसेज आर नॉट दैट हाई कि मैं क्लाइंट्स के यहाँ भेज सकता हूँ. दिल्ली मुंबई यू कांट अफोर्ड टू सेंड द पीपल टू क्लाइंट्स प्लेस. इतना डेडिकेटेड बंदा कि मतलब शायद मैं किसी को 100 रुपए छोड़ दूं लेकिन वो ऑफिस के लिए बेईमानी नहीं कर सकता, इतना ऑनेस्ट. और वो ऑनेस्टी आई कैसे, वो डेडिकेशन आया कैसे कि पूरा हम उनको इज्जत देना. दिवाली की पूजा, कई बार ऐसा नहीं होता कि मैं ऑफिस में दिवाली की पूजा मैं खुद करूं, बिकॉज दिवाली मेरे घर में अगर लक्ष्मी आ रही है तो उसके लिए मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, सब लोग मिलकर के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो मेरा वो जो फील्ड स्टाफ जिसको क्लास 4 स्टाफ बोलते हैं, एक दिन एक दिवाली पे हमने उससे और उसकी वाइफ से पूजा करवाई ऑफिस की, बिकॉज एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूट. तो उसका डेडिकेशन आया. लेकिन एक गलती मैंने की, और वो गलती क्या थी, दैट आई टुक दैट पर्सन फॉर ग्रांटेड. तो कभी कभी मेरा बिहेवियर थोड़ा सा रैश हो जाता था. And one fine day that person tendered his resignation, and it was shock to me how this person can leave my office. मैंने उसको सब बोला लेकिन he was not ready to stay, and finally he left, and I was disturbed for few days because he was a very valuable person for me. और इसलिए कहते हैं ना, किसी इंसान की असली वैल्यू का एहसास आपको उसके आने से पहले और उसके जाने के बाद पता चलता है. काश उस इंसान की वैल्यू आप उसके रहते हुए समझ जाएंगे तो रिलेशनशिप कभी खराब नहीं हो सकती. ऊपर वाले का आशीर्वाद कहें या मेरे अच्छे कर्म कहें, वो इंसान 1.5 साल बाद वापस मेरे ऑफिस में लौट के आया. उसकी हिम्मत तो नहीं थी, बट आई कुड सेंस दैट ही, उसने मुझे बोला, सर आई एम सर्चिंग अनदर जॉब, प्लीज हेल्प मी. फाइनली आई कुड ब्रिंग हिम बैक, एंड ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, my behavior from him is changed. और आज ही की बात है, I had a couple of meeting and I reached office at 2 o'clock. Okay, and he was having fever. वो आया, उसको बुखार था. तो she asked, my partner got to know that he's having fever. तो उसने फीवर कि आप चले जाओ, कि नहीं, लेट सर कम, सर को बता के ही जाऊंगा. चाहे वो फोन पे बोलता तो मैं उसको इमीडिएटली रिलीफ दे देता, पर वो आया, आते इसने बोला सर मुझे फीवर है. मैंने कहा इमीडिएटली गो बैक टू योर होम. सो अभी उसका जो डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, वो पिछली बार से ऑलमोस्ट डबल है. सो इन छोटी छोटी चीजों को आप देखोगे ना तो बहुत वैल्यू ऐड करती है. आपकी जो मैन पावर है दोस्तों, आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, आपका जो एक्सपेंशन है, आपकी जो क्लाइंट की बेस्ट सर्विस आप देना चाहते हैं, वो आपके ह्यूमन रिसोर्स की वजह से देते हैं. और ह्यूमन रिसोर्स को ग्रो करना, उसको रिटेन करना और उससे प्रोडक्टिविटी निकलवाना, ये कोई मैकेनिकल टास्क नहीं है, ये प्योरली एक रिलेशनशिप की बात है. तीसरी चीज है आपके परिवार का और आपके ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है. लोग एक दूसरे को कितना ट्रस्ट करते हैं, कितना क्रिटिसाइज करते हैं, कितना एक दूसरे को केयर करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है. एक दूसरे को कितना ट्रस्ट करते हैं. कई सारी जॉइंट फैमिली, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिनके यहाँ पर एक फैमिली बिजनेस के क्लाइंट्स होंगे, और कई ऐसे केसेस हुए होंगे कि जॉइंट फैमिली में धीरे धीरे से कुछ प्रॉब्लम्स हुए एंड द बिजनेस गॉट स्प्लिटेड, फैमिली गॉट स्प्लिटेड. और मैंने देखा कि मेरे पास कोई जॉइंट फैमिली की बिजनेस के क्लाइंट्स हैं, तो देयर आर 4 brothers और 3 brothers, but slowly and gradually they start losing trust with each other, and they start building their own wealth or on savings. And over the period of time, after certain period of time, their family is broken, their business is broken. So ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज है. जिस दिन मुझे ट्रस्ट हो गया कि आप मेरे से ज्यादा खुद का ख्याल रख रहे हैं या रिलेशनशिप में आपका बिलीफ नहीं है, तो पीपल विल नॉट डेफिनेटली स्टे इन दैट रिलेशनशिप. इफ यू हैव कंप्लेनिंग एटीट्यूड, हमेशा शिकायत करना, अरे आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक रिलेशनशिप में. तो कंप्लेनिंग बिहेवियर. और मैं आपको एक चीज और बताऊं दोस्तों, कभी भी जो कुछ आज हम डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है 2-4 पॉइंट्स आपको क्लिक करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी पॉइंट क्लिक करें, पहले हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें. हमें जाकर के फैमिली में या वर्क प्लेस पर ये नहीं बताना यू शुड डू दिस. आज मैंने सेमिनार में सुना, नो बॉस, वी आर अटेंडिंग दिस सेमिनार फॉर आवरसेल्व्स, not for others. If I correct myself, uh, I give you an example.
I went to one of my friend's place on Sunday. तो मैं और मेरे फ्रेंड बात कर रहे थे. उसका 8 साल का बेटा बार बार, बिकॉज उसके बेटे को भी उनके पापा के साथ एक ही दिन मिलता है, so he wanted to spend more time with his dad. So he kept coming and it was disturbing actually the conversation. So उसके पापा को लगा कि इसको मुझे engage करना चाहिए. So what he did is he took a magazine, और उस पूरी magazine में पूरा word map बना हुआ था. So he took that page out, tore that paper into pieces and gave to that child कि बेटा ये पेपर को वापस उसी फॉर्म में जमा के वो अरेंज करके लेके आओ. Okay, and I'll give you a chocolate. Father expected the son will take some at least half an hour or 1 hour to do that, because rejoining that word map was not easy and it was torn into multiple pieces. The paper was torn into multiple pieces. The guy comes within 5 minutes. Papa, it's done. And that the dad was really amazed to see, or astonished to see that. How could he do that? उन्होंने कहा पापा, ये दुनिया का जो एक तरफ तो इसमें नक्शा था और दूसरी तरफ एक आदमी का चेहरा था, तो मैंने पेपर को उल्टा करके इंसान का चेहरा ठीक कर दिया. तो मैंने क्या किया, मैंने इंसान को ठीक कर दिया तो दुनिया अपने आप बन गई. ओके, दुनिया अपने आप सेट हो गई. माय डियर फ्रेंड्स, ये कंप्लेनिंग जो कुछ कर रहे हैं, हम अपने को ठीक कर ले, अपने अंदर जो डेफिशिएंसी उसको समझ लें, तो ट्रस्ट मी आराम से बाकी चीजें सेट राइट हो सकती है. तो मैंने फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी. हम इतना रिजिड हो जाते हैं कि हम अपने तरीके से काम करते, वी ट्राई टू गो ऑन आवर ओन वे. सम टाइम इन रिलेशनशिप our past experience and childhood traumas also affect. Yesterday I was reading a wonderful book, How You Can Heal Your Life, and how our childhood patterns in terms of relationship, what kind of relationship I noticed when I was a child. So relationship with my parents, relationship of my mom and dad, and relationship within the family, actually we replicate that in our future. So that was a wonderful full book I started reading last night. And also a contradictory beliefs. Contradictory belief means me and my boss have a different belief system, me and my wife have a different belief system, me and my son is having different belief system. So that also caused conflict between two of them. And then there are few causes, habits. Like I've seen, one recently married couple approached me for counseling because they were having some conflict. Last Sunday I was with them, and the major cause of their conflict was the difference in habit. Husband's wife had a complaint that he wakes up very late, he doesn't make up clean his bed, and the way he eats, he creates a lot of sound when he eats, and it's very irritating, and I've told him multiple times, please don't do that. And that later on got converted into silly fights, small fights, unnecessary debates, and finally they are in such a situation that they are not ready to live with each other. So that's also one of the reasons. If you do not spend quality time, whether it's your client, whether it's your employee, if you want your employee to function, you sit with them at least once a week, understand their problems, groom them, guide them, train them. At the same time, one important reason I would love to tell you, that is personal space. What does that personal space mean? Personal space means, specifically in case of two close friends, husband or wife, father and son, or mother and daughter. Even if it is a 10-year-old child, my eldest son had a separate room after he was 10-year-old. I never entered his room without knocking. And when I never tried to peep in his mobile. Okay. Till the time, everything I should investigate or inquire when something is wrong, something wrong is happening. But looking to his general conduct or behavior or results
or looking at his friends, I had a belief that he is on the right track. So you must give them the personal space. There are a lot of hue and cry between spouse about their mobiles. I don't remember in last 10 years I ever tried to peep in my wife's mobile or my wife tried to do so. It's a matter of trust, my dear friends. It's a matter of mutual understanding, giving personal space. So if you're marrying somebody, if you're hiring somebody to office, you are not owning that person fully. That person is having personal space, and you must give that personal space to that person. आप ट्रस्ट करो या मत करो दोस्तों, जिसको गलत करना होगा तो वैसे भी कर लेगा, आप कितना भी उसको टाइट कर लो, लेकिन जैसे आप स्पेस देते हो ना किसी को, उसको अच्छा महसूस होता है, आपके लिए आपके उसके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट आती है. Okay, sometime hormonal changes is also reason, because if there is a imbalance of hormones, and you know that to live happy we need few hormones inside our body, endorphin, dopamine, serotonin. So 3-4 तरह के हार्मोन्स जो हमें चाहिए होते हैं, और कई बार विटामिन की डेफिशिएंसी से, किसी और वजह से, किसी और स्ट्रेस की वजह से वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और वो हार्मोनल इम्बैलेंस भी कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप को, बिकॉज वी फील इरिटेटेड, वी फील एग्रेसिव, वी लूज पेशेंस, तो उसकी वजह से भी ये होता है. स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजन, हेल्थ इश्यूज, इमोशनल केओस, बहुत सारे रीजन, ये सारे बैड रिलेशनशिप के रीजंस हैं. अब आने वाले पार्ट में हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे. सो हाउ यू कैन, I do not claim that you can change yourself overnight. You can I do not believe and guarantee that you can expect somebody to change overnight. And I do not expect that if I'm talking about 10 or 15 solutions, that you will be, or anybody who could implement all 15 of them. Even if you are able to implement one of them. I didn't get that. Could you try again? Even if you could implement one of them, my dear friends, your life will change substantially. Okay. किस इंसान को कौन सी चीज क्लिक करेगी मुझे नहीं पता, but why we are not able to change our temperament and behavior? Because suddenly I feel motivated after attending a seminar or a book or by getting inspired. तो उस वक्त मोटिवेशन बहुत हाई होता है, और उस वक्त हम क्या गलती करते हैं कि सारे बदलाव एक साथ लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदलाव सारे एक साथ नहीं आ सकते. और कल मैंने कहा, कल की सेमिनार में, इट्स ऑल मैटर ऑफ बिलीफ. तो जब तक आप अपने न्यूरोलॉजिकल पाथवेज को नहीं बदलेंगे, जब तक आप अपने बिलीफ सिस्टम को नहीं बदलेंगे, मान लीजिए गुस्सा है, somebody comes to me, देखिए, if you could read the last point of this slide, emotional chaos. And that emotional chaos causes somebody to get angry and aggressive in a conversation. And if somebody gets angry, that is direct damage to the relationship. बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं, बहुत गुस्सा करता है, somebody reacts a lot, और वो रिएक्शन की वजह से रिलेशनशिप डिस्टर्ब होती है. अब नाउ अंडरस्टैंड, अ पर्सन कम्स टू मी एंड टेल्स मी, सर मेरा गुस्सा बहुत तेज है, आई एम अ वेरी एग्रेसिव पर्सन, आई गेट एंग्री क्वाइट ऑफन. दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम. My dear friend, anger is not a problem. Problem something else in your head. Anger is an outcome of that problem. Anger is a symptom of a problem. So we must understand what are the trigger points of that anger, what are the root causes of that anger or that reactive behavior. As an NLP coach, we understand such negative or self-destructive behavior and their root causes. And there are ways and means, there are techniques through which we can change those behaviors right from in the mind. And after 2 or 3 days, you can see that person changing 360 degree. So हमें ये समझना पड़ेगा कि मेरे अगर कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, सेल्फ सबॉटाजिंग बिहेवियर है, तो उसका रूट कॉज क्या है, किस सिचुएशन में, कौन से टाइम पे, कौन सी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो आपका बिहेवियर ट्रिगर होता है. And then I tell you, 10 years back when I was
I was one of the attendees in one of the NLP workshop where I was learning how to control your mind, how to balance your mind, how to balance your emotions. So I used to have a high temperamental issues. तो एक जनरल परसेप्शन मैंने बना लिया, कल भी हमने मॉडलिंग का बात किया कि my father has an anger issues and I also anger issues. I accept it as a problem and I had no solution to resolve that. But I failed to understand that was an outcome. Reason was something else. When I was talking to my coach, I was the participant, so I was talking to my coach. My coach spent half an hour to understand the trigger point of my aggression. तो एक चीज वहां पर निकली कि मुझे गुस्सा आने से पहले इरिटेशन होती थी. So I used to spend some 5-10 minutes in that irritation, and that irritation used to get converted into anger later on. तो हुआ क्या कि पहले तो ये समझा कि हाँ, पहले मुझे डायरेक्ट गुस्सा नहीं आता, पहले मुझे इरिटेशन होती है और इरिटेशन के बाद गुस्सा आता है. चलो ये एक पैटर्न समझा. And then I need to understand what are the trigger points. So my coach, after digging deep down in my mind by conversing with me, could identify 2 reasons, and I laughed after knowing to those couple of reasons. One of them was very silly. Every 3 or 4 hours I need to eat something. Okay, मुझे भूख बहुत लगती है. So, and I can't consume so much at one time. So if I take lunch, I'll take moderate lunch, but I need something to eat after 3 to 4 hours. और उस टाइम पे अगर जैसे मुझे भूख लगी है और मुझे कुछ खाने को नहीं है और ये मैं काम में बिजी हूँ या सामने कोई क्लाइंट बैठा हुआ है, तो धीरे धीरे वो इरिटेशन में कन्वर्ट होगी. और इरिटेशन के बाद कोई ऐसी सिचुएशन हुई तो मुझे गुस्सा आएगा, मतलब आई एम ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग ब्लास्टेड. वो ऐसी सिचुएशन में आ जाता था. अब क्या सिंपल सॉल्यूशन, दो एनएलपी के थ्रू उसको मैंने एड्रेस किया, फिर भी मैंने कहा कि भूख को क्यों खत्म किया जाए. तो आई स्टार्टेड कीपिंग अ स्मॉल बॉक्स विथ फ्यू कुकीज इन माय ड्रॉवर. मुझे लगा कि हाँ भूख लग रही है, तो आई यूज्ड टू टेक अ कपल ऑफ कुकीज and so it was addressed. So this was the reason number 1 for irritation. Reason number 2, जो कईयों के साथ हो सकता है कि आप जानते हैं कि हमारा काम बहुत फोकस वाला है, चाहे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं या कोई सीएमए फॉर्म बना रहे हैं या कोई अपील का रिटर्न सबमिशन बना रहे हैं, क्या कोई ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट कर रहे हैं या कोई चीज को स्टडी कर रहे हैं, जीएसटी के किसी प्रोविजन को, तो यू नीड लॉट ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन. बट मोबाइल डजंट अलाउ अस टू डू दैट. तो क्या होता है कि आप कर रहे हो काम, सडनली स्टाफ मेंबर कम्स इन, सर ये सडनली ये क्लाइंट. अच्छा, हम छोटे शहरों में रहने का एक नुकसान ये भी है कि क्लाइंट बिना अपॉइंटमेंट के भी आपके ऑफिस आ जाता है. उसने देखा कि गोस्वामी जी की गाड़ी खड़ी है नीचे, मतलब ऑफिस में होंगे, तो बिना अपॉइंटमेंट लेके, सो यू आर वर्किंग ऑन सम इंपॉर्टेंट टास्क एंड क्लाइंट कम्स इन. सो यू कांट से व्हाई यू हैव कम, बिकॉज उसके साथ भी आपको रिलेशनशिप बनानी है. उसका अलग रास्ता है, तरीका है टू हैंडल दैट सिचुएशन. सो वो एक रीजन. या मेरा मोबाइल बज रहा है, तो वो क्या हो रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू फोकस एंड समबडी इज कमिंग एंड मोबाइल इज आल्सो रिंगिंग एंड माय स्टाफ इज आल्सो ट्रबलिंग मी. सो आई एड्रेस दैट यूजिंग एनएलपी, बट आल्सो आई मेड सर्टेन अरेंजमेंट्स कि जब मैं बहुत ऐसा काम कर रहा हूँ एंड आई डोंट वांट डिस्टर्बेंस, मैं फोन को स्विच ऑफ कर देता हूँ, साइलेंट नहीं करता. क्योंकि क्या होता है, कुछ क्लाइंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो इस बात पे नाराज हो जाते हैं कि मेरे सीए ने मेरा फोन, मैंने ट्राई किया, मैंने नहीं उठाया. फॉर्चुनेटली वी आर नॉट डॉक्टर्स, वी आर नॉट हैंडलिंग एनी इमरजेंसी सिचुएशन, है ना. तो अगर मैंने 1 घंटे बाद भी किसी से बात की तो किसी की जिंदगी जाने का खतरा तो कम से कम नहीं है. हम ऐसे प्रोफेशन में, हम ऐसे व्हाइट कॉलर प्रोफेशन में कि हमारे यहाँ पर इमरजेंसी की सिचुएशन बेहद कम होती है. ज्यादा से ज्यादा वो सिचुएशन होती है कि भाई जीएसटी अथॉरिटीज ने मेरी किसी क्लाइंट की गाड़ी पकड़ ली और वो फोन कर रहा है सर, या किसी के अचानक से सर्वे और रेड हो गया, तो वो सिचुएशन, बट वो बहुत वंस एंड ट्वाइस ही नहीं है. तो मैंने क्या किया कि व्हेन आई एम डूइंग एन इंपॉर्टेंट टास्क, मैंने कहा भाई ये मोबाइल को मैंने साइलेंट पे रख दिया, या मैंने साइलेंट से भी बेहतर है मैं तो स्विच ऑफ करके एयरप्लेन मोड पे डाल देता हूँ. बाहर लोगों को बोल देता हूँ कि मेरे लिए, क्योंकि वो अगर फोन बंद आएगा तो लैंडलाइन पे कॉल करेगा. ओके, तो मैं उसको बोल देता हूँ मेरे लिए कॉल आए तो बोलिएगा कि किसी के साथ वो अर्जेंट मीटिंग में है, जैसे वो फ्री होंगे दे विल कॉल यू. स्टाफ को इंस्ट्रक्शन होता है भाई nobody will be disturbing you for next 1 hour, okay, unless there is a threat to your life.
You will not disturb me. So at least by bringing, why I could bring these changes, because I could understand the triggers and root causes of it. That's very, very important, my dear friends. आपके रिलेशनशिप में आपके इमोशंस और बिहेवियर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन और आपको समझना पड़ेगा. और वास्तव में उसके बाद, if I compare the kind of person I was 10 years back, if I compare today's version of me, there's a hell lot of difference, पॉजिटिव डिफरेंस इन माय टेम्परामेंट एंड बिहेवियर. और उसका सबसे बड़ा फायदा पहले मुझे हुआ है, क्योंकि बार बार गुस्सा होकर, इरिटेट होकर के मैं अपनी हेल्थ को नुकसान कर रहा हूँ. आई एम डैमेजिंग माय हेल्थ, माय डियर फ्रेंड्स, directly indirectly, first mental and then physical health. So let us come on the solution part. तो यहाँ पर कुछ points आपके सामने हैं कि how to mend our relationship, make them strong, whether it's with your client. Still I keep family first, क्योंकि मेरी family है तो मेरा profession, my profession comes secondly. Because मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ, and if there is any emergency in my family, I leave the office and my client, I'll go back to my family, because I'm earning for my family, for myself. So my family and myself comes first, of course. Okay, so these are the 10-12 ideas of how to make your relationships better, because होता है तो आपकी फैमिली और आपका प्रोफेशन आप अच्छे से चला सकते हैं. तो इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, कुछ चीजें मैं यहाँ, अप्रिसिएशन हम बाद में बात करेंगे, रिस्पेक्ट की यहाँ पर बात करते हैं. एवरीबॉडी ऑन दिस अर्थ इज हंग्री ऑफ अप्रिसिएशन एंड रेस्पेक्ट. अफसोस की बात यह है कि हम लोगों को रेस्पेक्ट अपने मतलब से, उनकी पोजीशन को देख करके देते हैं. Whereas anybody, the person who is cleaning my office and making my office a worthy place to sit and enter deserves that respect also. For 5 days, I was in Delhi, part of a conference. Monday, when I reached back, somebody told me that a newly recruited staff member of mine who's handling office and administration part spoke to my housekeeping staff in a louder volume, which was not in a good taste. Then I called that person who spoke in louder manner, and I told her that your intent was not bad, but your way was bad. आपका इरादा गलत नहीं था, आप अच्छी चीज के लिए बोल रहे थे, लेकिन आपका तरीका गलत था, रास्ता गलत था. उसको समझ आया, और मैंने ये कहा कि अगर आप इस लहजे में बात करोगे, you will lose the respect. People, if you do not respect them, they will not respect you. Okay? Housekeeping staff से उन्होंने बात किया. After 1 hour or so, I called that housekeeping staff in my cabin. I will adjust the loss in my budget itself. So what happened? I called him and I asked, something has happened to you. Somebody spoke to you in louder. हाँ सर, थोड़ा बुरा लगा. But ठीक है, it's okay सर. मैंने कहा कोई बात नहीं. I feel sorry on behalf of that. अगर आपको कभी ऐसा बुरा लगे तो उनको बोल सकते हो कि please don't speak in that louder manner. Doesn't. तो देखिए, respect. Everybody in this world, is hungry of respect. Whether it's your junior most employee or senior most employee, it does hardly makes any difference. Whether it's your client who pays you 2,000 rupees a year, or whether a client that pays you 10 lakh rupees a year, both of them, constitution of our country give them right to be respected, So let us be a genuine human being and respect everyone without any personal biases. So that is extremely important. आप उसकी बात करते हैं, बच्चों को बुरा लग जाता है. आप एक 5 साल के बच्चे को पब्लिकली डांट के देखिए, बच्चे को इंसल्ट फील होता है. बच्चा इसलिए परेशान नहीं होता कि आपने उसको डांटा है, बच्चा इसलिए परेशान होता है कि आपने 4 लोगों के सामने उसकी इंसल्ट किया. Even a child is expecting you to offer him the respect or her the respect. तो ये दिमाग से निकाल लीजिए. Everybody whosoever comes to you, you need to respect them. And relationship में बहुत छोटी छोटी चीजें मैटर करती है. I tell you, one staff member of mine was not well for last couple of days, and it was an emergency leave. And when that staff member came after 2 days to my office, I knew that the person was not keeping well. The moment I reached office, the first thing I did is
I personally reapproached to that person's workstation. I did not call that person to my cabin. I went to that person, smile, look at that person, and I said, "How are you feeling today? Are you okay?" And I spent 2-3 minutes just asking few caring questions. And you trust me, my dear friends, that day, the moment I asked those questions, that 3 minutes conversation, those caring questions gave a lot of energy to that person. A lot of energy. जो वीकनेस उसको थी ना 2 दिन की बीमारी की, वो निकल गई. और वही इवनिंग में सिचुएशन हुआ, मुझे उसको बोलना पड़ा, भाई इस 7:30 यू मस्ट लीव. नहीं नहीं सर, बस सोने वाला है, मैं पेंडिंग टास्क था. हाउ दैट हैपेंड? How that happened? Just because we need to be caring. I was caring actually. So ये छोटी छोटी चीजें होती ना, चलो बर्थडे विश हम कर लेते हैं, फेसबुक से पता चल जाता है, हम उसका ऑफिस में केक भी कटवा देते हैं. There are a number of things, but ये स्मॉल स्मॉल जो चीजें होती हैं ना, बहुत मैटर करती हैं. छोटी छोटी गलतियां आपको भूलनी पड़ेगी. आई गिव अनदर एग्जांपल. इट्स 2016, डिमोनेटाइजेशन का टाइम खत्म हुआ, एंड देयर वर फ्यू नोटिसेस दैट केम. सो एक दो क्लाइंट के केस में ऐसा हुआ था, रिटर्न फाइल नहीं हुए थे, तो उनके बिलेटेड रिटर्न्स हम प्रिपेयर कर रहे थे, रिटर्न फाइल हो रहे थे, एंड देयर वाज अ मिस्टेक कमिटेड बाय वन ऑफ माय स्टाफ मेंबर. अब गलती हुआ, मुझे मालूम है कि सामने वाला इंसान अच्छा इंसान है, गलती जानबूझ के नहीं की. मैंने उसको बोला, आपने मिस्टेक किया है, बैलेंस शीट में फिगर गलत डाला आपने, गलत इन्फॉर्मेशन मैंने सबमिट कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, विच इज नॉट. मतलब मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं, मैंने कहा ठीक है यार, गलती हो गया, इसको ठीक करके दे दो. मैंने उसको कुछ बोला नहीं, इग्नोर कर दिया. इट वाजंट अ स्मॉल मिस्टेक. 2 days later, that staff member comes to me and she tells me, sir, I'm feeling too suffocated for last 2 days. Okay, I committed a mistake and you didn't say anything. Please scold me, sir, so that I feel relieved from inside. आप जरा समझ के देखिए कि उनको ये मालूम है कि गलती मेरी इग्नोर कर दी, पर उसको दिमाग में कि सर मुझसे बोल क्यों नहीं रहे. लेकिन जब आप छोटी छोटी गलतियां लोगों की भूलते हैं तो पीपल फील गुड. पीपल try to negate such kind of mistakes or compensate such kind of mistakes in future. Empathy, we'll talk later. Speak through action. The kind of behavior you expect from your office people, the kind of behavior you expect from your kids, the kind of behavior you expect from your friends, you need to exhibit similar behavior first. And that's why I say you must speak through action, because your office people are going to follow your action. If you're disciplined, if you're punctual, if you have good temperament, if you work in a planned way, if you deal well with your clients, if you're an organized person in office, trust me, you build such culture and your office people are going to follow the same, because you're a role model for them. You are not punctual, how can you expect your people to be punctual? If you're not good in communication, how can you expect your people? So you need to speak through action. Positive criticism, we'll be talking in upcoming slides. And yes, don't try to change others. What does that mean? I told you that people want to work according to their own style. They need personal space. You cannot be me, I cannot be you. I have certain beliefs, I have certain habits, I have certain style of working. Same with you. So don't try to create clones. Don't try to do cloning. Let people be the original one. काम प्रोडक्टिविटी पे काम करिए, उनकी नॉलेज पे काम करिए, बट उनको अपना फोटोकॉपी मत बनाइए. दुनिया में आप एक इंसान को बदल सकते हैं दोस्तों, वो आप खुद हैं. आप दूसरों को नहीं बदल सकते. If you're trying to change others, it will end into a conflict. You are trying to enter in the personal territory of a person. You can guide them. If you do like this, it will be good for you. This is the area of improvement of yours. Changing or no, you can only inspire them to change. You cannot force them to change. Changing or not changing is their individual decision. It's their individual decision. And गलती तो दुनिया में बड़े बड़े लोगों से होती है. आप किसी कंपनी के सीईओ हो, आप 70 साल ओल्ड इंसान हो, आप बहुत सीनियर हो, आप बहुत नॉलेजेबल हो, एवरीबडी कमिट्स अ मिस्टेक.
Committing mistake is not a problem, but not accepting that, ये accept नहीं कर पाना कि मैं कोई भी गलती कर सकता हूं, that's a major issue. So let's admit a mistake. Once my younger son was 7 years old, he came and made me realize कि पापा आप जो हमको बोलते हो आज आप वही गलत काम कर रहे हो. मेरा ईगो हर्ट नहीं हुआ, मैंने उसको डांटा नहीं, मैंने एक्सेप्ट किया और उससे सॉरी फील किया. आई एम सो सॉरी, आई शुडंट हैव डन दैट. आई एम सो सॉरी एंड आई विल नॉट कमिट सच मिस्टेक. इट वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग, बट ही पॉइंटेड इट आउट एट मी. तो आप ये सोचिए कि लोगों को पता नहीं चलता आपकी गलती, आप एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन जैसे ही आप गलती एक्सेप्ट करते हो, आपकी वैल्यू, आपका रेस्पेक्ट उनकी नजर में बढ़ जाता है. आज कोई आपका स्टाफ मेंबर लेट आया और आपने उससे पूछा, आपने उससे कहा यू आर लेट बाय 15 मिनट्स. तो स्टाफ मेंबर कहता अरे सर वो गाड़ी पंक्चर हो गई थी, सर मेरी बस छूट गई थी, सर ये हो गया था. यू डू नॉट लाइक दैट. उसकी जगह स्टाफ मेंबर ये कहे आई एम सो सॉरी सर फॉर बीइंग लेट, due to certain unavoidable reason it has happened, but I'm sure that from tomorrow onwards I won't repeat. We will not question, we will not argue, because the person admits the mistake. आपने गलती की, आप एक्सेप्ट करिए. और ह्यूमिलिटी की बात करें, आखिरी पॉइंट, इसमें से कुछ पॉइंट्स आगे डिटेल्ड में हम लेने वाले हैं. अगर हम ह्यूमिलिटी की बात करें, मैं कहता हूं कि नॉलेज और विजडम में एक फर्क है. हमने बुक में नॉलेज है और नॉलेज को मैंने पढ़ा, नाउ दैट नॉलेज गॉट ट्रांसफर टू माय माइंड. इफ दिस नॉलेज डजंट come to my behavior, if it is not reflected in my behavior, it carries no purpose. And if that knowledge comes to my behavior, that becomes wisdom. That becomes wisdom. तो और ह्यूमिलिटी क्या है? आपके पास कितनी डिग्री है, आपने कितनी पढ़ाई की है, हम कितने लोगों को जानते हैं, मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मेरे कितने क्लाइंट है, मेरा ऑफिस कितने शहरों में है, इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता. लोगों को इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं. लोगों को इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उनकी ग्रोथ में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं. लोगों को इससे फर्क पड़ता है कि आपके साथ रह के वो अपना लेवल को कितना आगे ले जा पाते हैं. उनको इस चीज से फर्क पड़ता है कि आप उनसे कितने प्यार से बात करते हैं, उनकी कितनी इज्जत करते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. जब मैं ये स्लाइड इसलिए दिखा रहा हूं कि रिलेशनशिप बहुत मेजर चैलेंज है और एनएलपी में कई सारे ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं. कई लोगों का रिलेशनशिप टूट जाना है. अब यहाँ ब्रेकअप पेन में केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही नहीं, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ भी है, यहाँ पे फादर सन का ब्रेकअप भी है, यहाँ पे दो पार्टनर जो 20 साल से साथ में धंधा कर रहे थे उनका ब्रेकअप भी है. कई रिलेशनशिप में बहुत पेन होता है, लड़ाई झगड़ा होता है. वी कॉल इट अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, एंड हाउ टू ओवरकम दैट पेन. एंड इफ यू डू नॉट ओवरकम दैट पेन, दैट ट्रबल्स यू फॉर नेक्स्ट 10 15 20 years, and the trouble gets converted into lots of mental and physical troubles. Similarly, in past we might have had traumatic incidences, and the way in computer we can delete a data file, you can also delete that image, that memory from your mind very easily. If you have certain emotional highs and lows, emotional patterns, that can be changed. If you have certain beliefs that I don't trust people, people are not trustworthy, that can those beliefs of change. How that happens actually? If you look at these three circles, the blue circle says results, the green circle says action, behavior, and communication, and the orange circle says feeling, emotion, and thinking. Let us understand the pattern. I want my people to be productive in my office, so this is the result I want. Okay, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बिहेवियर करना पड़ेगा. वो चाहे मेरा एक्शन, बिहेवियर और कम्युनिकेशन हो, चाहे मेरे बंदे का हो. So to achieve results, we need right action, right behavior, and right communication. And remember, action, urge for an action, motivation for an action, behavior and communication, this comes from within. Within means from your mind. And they are affected, impacted by your feelings, by your emotions, by your thinking, by your attitude. And this attitude and feelings and emotions are actually pre-programmed in your mind, which cannot be changed so easily just by conviction. And you need to identify them and seek help. Single, I try to raise
Uh, I think some technical issue. No, Can you there's take no part? just a moment. Actually, Rajkumar sir got unmuted, so his voice was coming. Okay. तो मुझे क्या है कि अगर जिंदगी में रिजल्ट्स लाने हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के हो चाहे किसी और के हो, तो बदलाव दिमाग से होगा जहां पर आपके न्यूरोलॉजिकल पाथवेज बने हुए हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हम तो अपना सिबिल स्कोर तो कितनी बार चेक किया होगा, क्या आपने अपने रिलेशनशिप का सिबिल स्कोर चेक किया? एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको। 10-12 साल पुरानी बात है। I was doing seminar in a public sector undertaking. Okay, it was 30-40 very senior people, senior manager or general manager were sitting over there. We were talking about the workplace relationships and family relationships. So I gave them a piece of paper and wrote few things: spouse, your son or daughter, your parents, your 2-3 subordinates in the office. उन सबके नाम लिख लीजिए। उन्होंने नाम लिखा। अब मैंने उनसे एक सवाल किया कि 10 के स्केल पर आप मार्क्स दीजिए कि सामने वाला इंसान आपसे कितना खुश है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। योर पेरेंट्स, योर सन, योर स्पाउस, योर सबऑर्डिनेट्स, एंड गिव द जेन्युइन स्कोर व्हिच यू फील। तो मुझे ये स्कोर देना था अपने आप को 10 में से कि मुझसे मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा सबऑर्डिनेट, मेरे पिताजी कितने खुश हैं। 10 में से नंबर देने थे। तो जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, he gave himself is 7 or 8 or 9, so mostly 8 and 9, you know. Okay, काम खत्म हो गया। It was just for introspection. Next day morning 9 o'clock, when it was day 2. So next day, when day 2, so many people, all the people came back to the seminar. When seminar started, one person raised hand and he was feeling so upset. It was very much visible from the face of that person. And what happened? Sir, I want to share something. And what he wanted to share? ICAI seminar. So he stood up. He stood up, and what he said is, "Sir, I'm so upset with the shock." What was the shock? कि सर मैंने अपने बेटे को जाकर के ये बोला, एक पेपर दिया और बोला कि तुम मुझसे एज अ फादर कितने खुश हो, उसका 10 में से स्कोर दीजिए। एंड he gave me a score of 4 out of 10. And then I asked him the reasons. Then he told me various reasons. कि सर पापा आप मुझ पे कितना गुस्सा करते हो, मुझ पे पढ़ाई के लिए कितना प्रेशर बनाते हो, मैं मतलब यू पुट सो मेनी एंड फ्यू पॉइंट्स आर वेरी जेन्युइन। कि आप कभी कभी मम्मा को भी डांट देते हो, आप खुद लेट उठते हो लेकिन हमको जल्दी उठने के लिए बोलते हो, ऐसे उस बच्चे ने बोला। And literally when this person was sharing the feedback of his son, he had tears in his eyes. उसको लग रहा था I am the best father in this world, in this universe. But कस्टमर के फीडबैक की बात कर रहे हैं। तो हम अपना सिबिल स्कोर तो चेक किया, लेकिन कभी आप अपने रिलेशनशिप का भी सिबिल स्कोर चेक करिए। और वो सिबिल स्कोर कब बढ़ेगा? जब आप लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, जब आप लोगों की केयर करेंगे, जब आप अपने इमोशनल टेम्परामेंट को काबू में रखेंगे, जब लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, जब लोगों के दुख और दर्द और इमोशंस को समझोगे, जब उनको हम रेस्पेक्ट करेंगे, रेस्पेक्टिव देयर कास्ट, कल्चर, क्रीड एंड पोजीशन इन द एज। सो वी मस्ट चेक। एंड एक देखिए, फाइनेंशियल फिजिक्स सिबिल स्कोर तो एक ही होता है। रिलेशनशिप में देयर आर प्लेंटी ऑफ सिबिल स्कोर्स व्हिच आई टोल्ड यू इनिशियली। There would be a different CIBIL score with your dad. There would be a different CIBIL score with your spouse, different CIBIL score with your friend, different CIBIL score with your article, different CIBIL score with your client X and client Y and client Z. You must do that. मैं तो कहता हूं आप अपने एक कैटेगरी क्लाइंट, अगर ऐसे 20 क्लाइंट है, उनका आप दिखा रही है कि लास्ट टाइम आप उनसे कितना फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करते हैं, उनको कितनी बार उनके बर्थडे पे विश करते हैं, कितनी बार आपने उनकी किसी अचीवमेंट पे उनको बुके भेजा, कितनी बार हम उनके ऑफिस बिना किसी पर्पस के लिए गए। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे
कम से कम 25 क्लाइंट ऐसे हैं जो क्लाइंट बनने के बाद मेरे दोस्त बने। मेरे जितने क्लाइंट हैं उसमें से 50% मेरे दोस्त हैं। उनकी फैमिली में कोई भी चैलेंज आएगा वो मुझसे डिस्कस करेंगे, चाहे वो बेटे की एजुकेशन का हो, चाहे बेटी की शादी का हो, चाहे बिजनेस का कोई और इश्यू हो, चाहे फादर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे सोसाइटी में कोई और चीज हो। They do not only treat me as a chartered accountant, they treat me as my family member. Do you think they can ever think of changing their CA? No. और उस 50 में से कम 40 लोग ऐसे हैं जो कभी ये भी नहीं पूछते कि गोस्वामी जी आप कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं, पिछली बार तो आपका 20,000 का बिल था, इस बार 30 का क्यों आ गया, वो ये भी नहीं पूछते। It's not only the service you are providing, but the kind of bond of love, bond of warmth, bond of care, bond of concern you're creating. They treat me as their family member and they are not scared of me. कभी कोई प्रॉब्लम भी हो जाए ना उनके बिजनेस में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, किसी तरह की और में, आई नेवर मेक देम स्केयर्ड। मैं उनको जो समझाना था समझाता हूं, पर कभी डराता नहीं उनको कि तुमने गलत कर, ठीक है गलती हुई, लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो दे फील मोर कंफर्टेबल विद मी शेयरिंग देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स। 8 साल पहले वन ऑफ माय क्लाइंट्स, very young one, at the age of 35, he went to Mumbai for some personal task for 3 days, and then उसने बोला चलो बॉम्बे आए तो एक बार वो उसकी आदत थी हर एक साल में वो कंप्लीट बॉडी चेकअप कराता था। पूरा बॉडी चेकअप कराया तो किडनी में कुछ इश्यू निकला और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुए तो पता चला कि किडनी में एक छोटा सा कुछ ट्यूमर है एंड इट इज कैंसरस। और डॉक्टर ने इमीडिएटली बोला कि आपको अभी के अभी आज ही 1-2 दिन में इस किडनी को रिमूव करना पड़ेगा। तो उसने घर फोन किया कि हम कुछ बिजनेस के काम से अभी 8-10 दिन हमें मुंबई में और लगेंगे, हम 10 दिन बाद आएंगे। उस बंदे का एक फ्रेंड उसके साथ था, उसने वहीं किडनी ऑपरेट कराया और अपनी एक किडनी को रिमूव करवाया। ओके, इस बात को 8 साल हो गए। और जब वो लौट कर आया और जब उस सिचुएशन में आया कि वो मुझसे मिल सके 1-आध महीने बाद, he met me and he shared the whole incidents with me as a friend, not as a CA. और आज तक भी उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को पता नहीं है दैट इनकी और हर महीने फिर उनको कीमो के लिए जाना पड़ता था। ये ट्रस्ट कैसे आया? ये ट्रस्ट नॉर्मल बिजनेस रिलेशनशिप से नहीं आता। वी नीड टू इन्वेस्ट इन दैट रिलेशनशिप। और आज वो बंदा इतना ट्रस्ट करता है मुझे, इतना इमोशनली मुझसे कनेक्टेड है, और वो ये कहता है कि मेरे पिछले 8 साल में जितनी पॉजिटिविटी है आपकी वजह से, बिकॉज यू ऑलवेज इंस्पायर मी। एंड ही इज द पर्सन, बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, he in last 8-10 years he brought at least 5 new clients to me. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लाइंट वाइज अगर एनालिसिस करेंगे ना, कहाँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, कहाँ आपका कम्युनिकेशन कम है, कहाँ आपकी पर्सनल मीटिंग्स कम है, दैट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ कोर्स इन योर प्रोफेशन एज वेल। और रिएक्शन और रेस्पॉन्ड के बारे में तो मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सबको ये प्रिंसिपल मालूम है, उसके बावजूद भी हम लोग रिएक्ट करते हैं, रेस्पॉन्ड नहीं करते। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रेस्पॉन्ड? व्हाट इज द डिफरेंस? मैं एक केस स्टडी, बहुत पॉपुलर केस स्टडी है, आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, बट स्टिल दैट्स द राइट टाइम टू टॉक अबाउट दैट केस स्टडी। व्हाट इज दैट केस स्टडी? दैट husband and wife both are working. They have a small daughter of 6 years of age. She also goes to school. And what is the routine? That both of them gets ready together, including the daughter. They leave together. Mom drops daughter close to their house to a bus stop where school bus picks up the daughter, and that lady, that's a wife, takes a cab to office. Husband has a different route, so he straight away goes to office by his own car. One fine day what happened, they were taking the breakfast. Wife cooked the breakfast, they were taking the breakfast. The daughter was all set, all ready for the school, and she was playing with a toy, sitting close to father. और उससे कुछ ऐसा हुआ कि उसका हाथ कॉफी ग्लास पे लगा, कॉफी मग पे लगा, और कॉफी got spilled over the shirt of the father. ये सिचुएशन हुआ। Father immediately reacted. He shouted on the daughter, what the hell you are doing? You can't sit quiet for a moment. You spoil my shirt. You know I'm getting late for my office.
and all that. He was so loud, and that girl she got scared and started crying, and then the father was still shouting. The mother has to intervene. What mom said? Mom said, please, बच्चा है, गलती से हो गया, जानबूझ करके नहीं किया. And now the father was firing towards the daughter. अभी जैसे वाइफ ने इंटरवीन किया तो गन का जो पॉइंट है मॉम की तरफ हो गया. तुमने इसे बिगाड़ रखा है. Don't take her side. You are responsible for all bad habits she has inculcated in the last few years. Now, wife kept quiet. She did not react further. Now, here to change his shirt, he went upstairs, changed the shirt, comes back. Now, is this quarreling? They are late by 5-10 minutes. और उस टाइम तक उसकी बस जा चुकी थी बच्ची की. तो वाइफ, तीनों की रिलेशनशिप खराब है. The child is still crying. Wife is not comfortable because he also shouted on wife, and he is on an aggressive mood, so वो भी comfortable नहीं है. तो वाइफ ने उनको बोला कि भाई देखो ऐसा है, वो बस तो निकल गई, मेरे को कैब लेके ऑफिस में जाना, माई डायरेक्शन इज डिफरेंट, तो आप बेटर इसको स्कूल छोड़ते जाइए, स्कूल रास्ते में पड़ेगा आपको. अभी ये बच्चे स्कूल के लिए इसको कार में बिठाता है. स्कूल पूरे रास्ते उस बेटी, द डॉटर इज सो टॉकेटिव, पापा से बहुत बात करती है, पापा के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती है, पर पूरे 30 मिनट के रास्ते में उस बच्ची ने पापा से एक भी बार बात नहीं की. वो कांच में इस तरफ मुंह करके बैठी रही. स्कूल में बच्चे को छोड़ा तो एक भी बार उस डॉटर ने मुड़ के पापा को नहीं देखा. कई बार ऐसा मौका आया कि पापा ने बच्चे को स्कूल में छोड़ा. Whenever he leaves her to the school, she always waves, she always look with a beautiful smile. और वो लेट हो चुके थे और इतने गुस्से में थे और हमारा टेम्परामेंट बराबर नहीं था, तो एक आध जगह उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल भी क्रॉस किया, उसको 1500 का पेनल्टी लगा. फाइनली रीचेज द ऑफिस, और ऑफिस पहुंच करके रियलाइज किया उसने कि वो एक फाइल जो डाइनिंग टेबल पे रखी हुई थी, मैं उसको ब्रीफ केस में रखना भूल गया, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फाइल जिस पर मुझे आज काम करना था. अब सोचिए, शाम को जब वो लौट करके घर आता है तो माहौल ठीक नहीं है. अभी भी डॉटर उदास है और वाइफ ठीक से बात नहीं कर रही है. ये क्यों हुआ? सारा का सारा ड्रामा रिएक्शन की वजह से, रिएक्ट करने की वजह से. अब इसमें रेस्पॉन्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते थे? आज उसके कॉफी गिरा. मुझे मालूम है कि ठीक है, बच्चे शैतान होते हैं, बच्चे एक जगह नहीं बैठ सकते, कांट एक्सपेक्ट देम टू बी रोबोट. तो क्या कह सकता, अरे बेटा ये क्या कर दिया आपने, मेरी शर्ट गंदी कर दी, ध्यान रखिए, देखो मुझे शर्ट चेंज करना पड़ेगा ना, मुझे टाइम लगेगा. यू कुड हैव डन दैट, यू कुड हैव टैप अ चीक ऑफ दैट पर्सन. उसको बोलते बेटा टेक केयर ऑफ इट इन फ्यूचर. अगर ऐसा करते ना, आप लेट होते, ना आपकी फाइल छूटती, ना आपको ट्रैफिक सिग्नल लगता, ना आपको आपके बच्चे का वो रूखा बिहेवियर आपको देखना पड़ता. सो ऑफिसेज में, क्लाइंट के साथ, पब्लिक लाइफ में कई बार हमारे इमोशनल इश्यूज की वजह से हम रिएक्ट कर देते हैं. और मैं आपको बता दूं, रिएक्शन आपकी रिलेशनशिप को तो स्पॉइल कर ही रहा है, बट आपकी मेंटल पीस को आप एक बार रिएक्ट करते हो ना, तो आपकी बॉडी में इतने सडन चेंज आते हैं कि इट टेक्स मिनिमम 3 आवर्स. आपकी बॉडी को पूरी ओरिजिनल सिचुएशन में आने में 3 आवर्स लगते हैं. इतना नुकसान हमारी माइंड और बॉडी को होता है व्हेन वी रिएक्ट इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग. और इससे सीधा रीजन गुस्सा. रिएक्शन को आप गुस्से से कनेक्ट कर सकते हैं. और आप समझ लीजिए, गुस्से का कारण उतना पावरफुल नहीं है जितना कि गुस्से का रिजल्ट है दोस्तों. बाद में आपको कितना अफसोस हो जाए, लेकिन रीजन इज नॉट एज पेनफुल ऑफ एंगर जितना रिजल्ट है. और एक चीज मैं ये कहूंगा, जब हम टेकिंग फॉर ग्रांटेड रिलेशनशिप में एक मेजर इशू जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि वन मेजर प्रॉब्लम इज वी टेक पीपल फॉर ग्रांटेड. ये हम कई क्लाइंट्स के साथ ऐसे करते. कुछ हमारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको ज्यादा पूछते नहीं हैं, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, टाइम से पेमेंट करते हैं, अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, डिमांडिंग भी नहीं होते. व्हाट वी डू इज वी स्टार्ट टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड. उनके हिस्से का टाइम, उनके हिस्से की क्वालिटी उनको हम नहीं देते. यही चीज. और सबसे ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड किसको लिया जाता है? वी टेक जो हमारे सबसे करीबी होते हैं, हमारे अपने परिवार के सदस्य होते हैं. आपका देखिए, आप जरा सोच के देखिए कि आपका गुस्सा किन लोगों पे ज्यादा निकलता है, आपके अपनों पर या अजनबियों पर? अपनों पर. आपके अपने जो आपके लिए अनकंडीशनल इतना काम करते हैं, they do not deserve your anger, they deserve your love, they deserve your concern, they deserve your care. Why we shout at them?
And when we start taking our relations for granted, वो शुरुआत होती है किसी भी रिलेशनशिप के मरने की, उसके खत्म होने की, चाहे वो फिर हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे पेरेंट्स किड्स का हो, चाहे प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, चाहे दो दोस्तों का रिलेशनशिप हो। कभी किसी को ग्रांटेड मत लेना। मैंने कहा ना शुरुआत में, किसी की इंपॉर्टेंस का एहसास उस इंसान के आने से पहले और उसके जाने के बाद हमें पता चलता है। और एक बार किसी इंसान के जहन में से आपके लिए इमोशंस मर गए, इमोशंस खत्म हो गए, उसको जिंदा करना बहुत बेहद मुश्किल काम है, बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि साल लगते हैं इमोशंस को मरने में। एंड if you kept on misbehaving with people for 5-6 years and that person is literally dead in terms of emotions towards you, it would be very difficult for you to rekindle those emotions. So do not them for granted. चाहे वो आपका 4 साल का बेटा हो, चाहे आपका हाउसकीपिंग का स्टाफ हो, चाहे आपका 2000 रुपए का क्लाइंट हो, चाहे 2 लाख का क्लाइंट हो। मेरे लिए 2000 का भी उतना ही जरूरी है जितना 2 लाख का। और इसमें एक बदलाव अगर हम अपनी जिंदगी में कर लें, दैट इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी आदत है, एक ऐसी एडिक्शन है दैट हूसोएवर, जैसे कई लोग है ना स्पाइसी चीजों के शौकीन होते हैं, उनको स्पाइसी खाने में मजा आता है। कई लोग स्वीट्स के शौकीन होते हैं, उनको स्वीट्स खा के जो जो आनंद मिलता है, जो मजा आता है, जो शौकीन होते हैं। क्रिटिसिज्म भी एक ऐसी एडिक्शन है, पता है। Those who are addicted to criticizing people, they love criticizing. जब तक वो दिन में 10-20 लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर लेते, उनको मजा ही नहीं आता, उनको उस आनंद की अनुभूति नहीं होती। They do not feel that joy actually. And we have seen people, and when you start noticing people, you can find 2, 3, 4 people in your vicinity, those who love to criticize. They will criticize country, they will criticize religion, they will criticize your city, they will criticize their parents, they will, matlab, they can criticize anybody, literally. They are not solution providers, they can only fault finders. And if you are having this kind of attitude, you know who are the person at maximum loss? You yourself, because you are creating your mind to be a dustbin. And then you go with the same critical attitude to your family, and you creating negative vibes all around. You are creating those negative vibes in your office as well. Okay, what does that mean? It doesn't mean that if you do wrong, I do not tell you, should not tell you. That's why there is a way we call a sandwich criticism. What is sandwich criticism? We call it a positive criticism. Positive criticism means मेरे ऑफिस का एक बंदा है, उसने कुछ गलती की है, उसके साथ कुछ टेम्परामेंटल इश्यूज है, तो मुझे उसे कैसे क्रिटिसाइज करना है। नंबर 1, आइसोलेशन में, आई शुड कॉल हिम टू माय केबिन, make him feel comfortable. Now, rule number 1. Rule number 2, I should start with a positive note. जो कड़वी दवा होती है ना, वो कैप्सूल में डाल के दी जाती है। अगर आपने डायरेक्ट उसके मुंह पे ब्लंटली उसकी गलती बता दी, nobody likes to be pointed out as far as mistake is concerned. तो you start with a positive note. अच्छा, क्या चल रहा है? अच्छा, सब कुछ बढ़िया. I like the way you work. I like your temperament. And I appreciate that. अच्छी से शुरुआत की, बहुत डिप्लोमेटिकली आपने जो सजेशन देना है, जो क्रिटिसिज्म देना है, योर पर्पज इज नॉट टू क्रिटिसाइज, योर पर्पज टू हेल्प दैट पर्सन इंप्रूविंग, ये पर्पज है। तो आपने बहुत डिप्लोमेटिकली उसको बता दिया कि यहां आप ये काम ऐसा करते हो, आपको ऐसे करना चाहिए। आप अपना वर्डिक्ट मत दीजिए, आप अपना सजेशन दीजिए। इन माय ओपिनियन, if you control your temperament, if you do it like this, if you come on time, it would be good for you. It will help you growing in your future. आपने वर्डिक्ट नहीं दिया, आपने ओपिनियन दिया है। वैसे फिर देखिए, आपने पॉजिटिव स्टार्ट किया, डोज दिया, एंड पॉजिटिव एंड करेंगे। बट आई लाइक यू एज अ पर्सन, यू आर वेरी गुड लिसनर, you the way you plan your work, I like you. So start positively, give your dose diplomatically, just as an opinion. I tell you, people will go fan of yours. और मुंह पे अगर उनकी गलती बता दी, क्रिटिसिज्म कर दिया, they become your enemies. I tell you, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो,
if you want people to change, follow the positive criticism principle. और जैसा मैंने कहा पहले भी, रिलेशनशिप को खराब करने में और अच्छा रखने में कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रोल है. सबसे ज्यादा वायलेंस वी कमिट थ्रू वर्ड्स. You'll hardly find people who get into physical violence in a conflict, but majority of us, more than 90% cases, we do that violence through our words. If you slap a person will forget in a few days. But if you hurt a person using wrong words, I don't trust you, you did this to me, it was a complete waste of investment of time in you, you're not a worthy person to be lived with, you can't do anything. These are the words we are using. It's actually a violence, because it is hurting mind and soul of that person to the core. The person can still forget physical violence, but can never forget these pinching words. I tell you, my dear friends. So if we start minding our language, how it can hurt. आप अपने आप को उस जगह पर रख करके सोचिए, then you will come to know how difficult, how important it is to mind those words. That comes ego. Okay. ईगो एक ऐसी चीज है जो अच्छी खासी चीज को बिगाड़ सकती है. और मैं भी एक आम इंसान हूं, मैंने भी अपनी गलतियों से सीखा है. Okay. 2011 I got a new client. He was not happy with the existing CA. Okay. He came to me, somebody referred him to me. We started working. He had a lot of expectations from me. But the problem is he was not ready to go with the processes and systems. He wanted me to act according to his processes and systems, and having a lot of expectations. So of course, expectation will not meet. उसको सर्विस टैक्स जमा कराना है तो मैं उसको 10 बार याद करा दूंगा, जमा नहीं कराएगा. डेट निकल जाएगी, उसके 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब उसकी इच्छा होगी वो बोलेगा सर सर्विस टैक्स आज जमा कराना, आज किसी को भेज दो. अब उस दिन मैं फ्री हूं या ना हूं, उस दिन उसका सर्विस टैक्स जमा होना चाहिए. आई एम टॉकिंग ऑफ 2012-13. अब एक दिन उसका फोन आता है कि सर वी वांट आवर फाइल्स बैक, वी वांट टू गिव इट बैक टू आवर ओल्डर सीए. And because of inflated ego in me at that time, I did not tell them, ask him once, what is the problem you have? Let us sit and resolve it. Because of that ego, I said, okay, you can come and take files back. एक ईगो था, ठीक है तेरे को जाना है जा. बट मैंने बाद में रियलाइज किया, अच्छा अच्छी बात यह है कि वो लोग जो they were younger than me आज भी मेरे टच में है, मुझे आज भी उतना ही रेस्पेक्ट करते हैं, और मैं शायद लगता है कि पहले से ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं. ओके. तो मुझे लगा बाद में कि शायद मेरे ईगो ने वो आंसर दिया. उसकी जब मैं कहता कि ओके सर आपको फाइल चाहिए मिल जाएगी, लेकिन बिफोर दैट आई वुड लाइक टू स्पीक टू यू, लेट अस मीट इन पर्सन एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू हैव. और ऐसा तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ऐसा तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था जिस प्रॉब्लम को मैं रिलीज नहीं कर सकता था. हो सकता था कि वो, लेकिन मुझे चाहिए कि मेरा ईगो इतना बढ़ गया. बट आई लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड आई डिड नॉट रिपीट इन फ्यूचर. उसके बाद शायद 1 या 2 इंस्टेंसेस ऐसे हुए होंगे कि लोगों ने अपना डिसप्लेजर बताया, मेरी गलती नहीं हो तो भी. आई रिजॉल्व दैट मैटर एंड आई फेल्ट सॉरी फॉर दैट. एंड आई शायद 10% ही गलती क्यों ना हो, 90% उसकी हो, फिर भी मैंने सॉरी बोला, उसको रिजॉल्व किया. और उसके बाद ऐसा रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हुआ दोस्तों, दैट अब उसको कोई प्रॉब्लम होगा तो भी वो नहीं बताएगा, या प्रॉब्लम होगा तो भी वो ये नहीं बोलेगा कि आपकी वजह से. सो ये जो ईगो है कि ऐसी खतरनाक चीज है रिलेशनशिप में, और खास करके बिजनेस रिलेशनशिप में, तो ये ईगो हमारे को बहुत ट्रबल कर सकता है. हाँ, एम्पैथी की हमने बात किया, अंडरस्टैंड की बात किया. आई थिंक इट्स 5:35 एंड वी हैव so many questions already with us. So as I said that प्रेज की मैंने बात की कि हमें लोगों को प्रेज करना चाहिए. प्रेज से बड़ा इंसेंटिव आप लोगों को दे नहीं सकते, चाहे वो ऑफिस का स्टाफ हो. मैंने कहा कि वो अच्छे सैलरी की नौकरी को छोड़ के चला जाएगा, अगर वो अंदर से खुश नहीं है, प्रेज करके उसको आप दे सकते हो.
कि अगर आप सही जगह पर सही इंसान को अप्रिशिएट करते हो तो उस इंसान का दिन बना देते हो, उस इंसान को इतना मोटिवेट करते हो कि उस इंसान मतलब वो उसको जो आपने हैप्पीनेस दिया ना, वो हैप्पीनेस कहीं और भी रिफ्लेक्ट करेगा उसका. That's why I say be an encourager. The word is already having a lot of critiques. So be different from others. And if you want people to remember you, if you want people to quote your name, if you want people to see you as their role model, if you want to be a different personality altogether, be an encourager, my dear friends, without any self-interest. Be an encourager. Not necessarily you encourage only for the purpose, for your self-interest, only to your own kids, but you can encourage to everybody. And I told you, communication is an integral part. Express, communicate, express your emotions to your loved ones. Tell your child that you love your child a lot. Tell your parents, sit with your parents at least five minutes a day and spend some quality time with them and tell them how fortunate, how blessed you are by having such parents. And if you do that, no one can disturb your relationship, I tell you, no one. So these are a few things I wanted to share, my dear friends. It was wonderful talking to you on day 2. It was a great opportunity. Thank you, Rajkumar sir, for giving me this opportunity. Thank you, ICAI, and all the officials who are working hard to make this seminar possible. Thank you so much. You can note down my WhatsApp numbers in case of any query you want to connect me personally with me. I'll be happy to help you. And meanwhile, we take it forward. I have questions already. Okay, fine. So any questions do we have? I request technical team to please move forward for question answer session. And okay, any questions? So first of all, that was a very great and insightful session, sir, which you covered how minutely you explained the bond of love, the relationship, which I think definitely everyone will help in their, whether they are CA practitioners or whether their personal life or professional life. So that was very, I think, helpful. I can also relate very the examples which you gave. And so we just go through the questions. So if anyone wanted to ask, so please Okay, write in the chat there are box. already a couple of questions. There's a question from Parth. How can we do NLP practitioner course? I shared my number with you guys. You can just contact me for that. I'll notify you. I'll share the information. There's one interesting question related to relationship. Does it seem sometime that for maintaining relationship, you become a doormat? How do you reconcile self-esteem versus high relationship? Wonderful question, I tell you. I appreciate you for that. There is a concept called firmly affectionate. A good relationship, being caring and concerned, does not mean I'm asking you to sacrifice with your ego. I'm not asking you to make it zero. Balanced ego भी एक चीज होती है, सेल्फ रेस्पेक्ट भी एक चीज होती है. जब आप लोगों के साथ डील करते हो दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको अपना सेल्फ रेस्पेक्ट भी रखना चाहिए, आपको ईगो को बैलेंस रखना चाहिए. जिस वक्त द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग दैट द अदर पर्सन इज टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, you start disconnecting with that person. So you need to balance that out. I'm not asking to sacrifice 100% to one somebody, because if somebody is not valuing it, of course somewhere you have to draw a boundary line. So do not allow yourself to be a doormat. You need to balance it. Any other question? Okay, so there's one more question. Violence of words affect the relationship, how we can cure it. Okay, now question is, if I'm the person who's using bad words, who's doing violence, so of course I should mind my language and I should avoid. Even if I'm talking to a 3-year-old child, even I'm talking up to a person who cleans my office, I should be very careful while choosing the word. Even if I'm not feeling good from inside, I'm feeling aggressive, I should use word carefully. But if the other person is constantly using bad words to you, how not to feel hurt? Because I cannot shut other person's mouth. You know,
I cannot change other person's temperament, but I can help myself so that I do not get affected with those bad words. Of course, there are certain ways and means through which, अब अगर ये कोई specific relationship के case में, like one lady chartered accountant contacted me a few years ago, and after marriage she was really bothered and she was slipping into depression because of the behavior of her mother-in-law. She used to, used to do a lot of violence through words, but I couldn't, I had no authority or no power to change her mother-in-law, but I counseled her and did an activity for 30 to 40 minutes जिसमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, अब अगर वो कुछ ऐसे बैड वर्ड्स बोल दिए तो दैट विल नॉट रीच आउट टू माय माइंड, दैट विल नॉट मेक मी इमोशनली स्टेबल. And that thereafter that the whole scene was changed. So that is possible that we can cure it if I'm the sufferer. I think I need more questions from others. Parth has already asked so many questions, so any other question, Parth, you can take my number. I'll answer all your personal questions. I can understand, but yes, any other questions do we have? Parth, I appreciate you for your questions and the level of your understanding. He says there may be other views on happiness. If other person cause of happiness, then they can be cause of sadness, anger. Of course, yes. Of course, yes. I understand that. That life is full of happiness and sadness. No, when God sent us on the planet Earth, God never give a guarantee that we'll be happy always. So sadness and happiness is a part. The only thing is, when we enter into a relationship, we should not be that emotionally weak that my life should revolve around that person. जिसको हम बोलते हैं ना emotionally balanced और emotionally strong, तो वो करना पड़ेगा. अगर आपको लगता है कहीं आपको कोई चीज में इमोशनली वीक हो रहे हो तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं. The way we feel addicted for some substance, some material substance, similarly we can be addicted to a person. और वो sadness भी क्यों आती है? Expectations की वजह से. In a relationship, you are contributing without any expectation, you can never be sad. But mismatch of that expectation actually makes us sad. Okay. Very smart question. How to behave or manage behavior smartly with clients while demanding our fees? I tell you, because I speak a lot about NLP. NLP is used in sales a lot. NLP is used in leadership a lot. सबसे ज्यादा इस वक्त NLP का इस्तेमाल सेल्स में होता है. कंपनीज अपने सेल्स के लिए NLP का इस्तेमाल करते हैं. आपको मैं बता दूं, 2008 में जब बराक ओबामा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहे थे तो 6 मंथ्स का उन्होंने NLP कोचिंग लिया, सिर्फ इसलिए कि उनके दिमाग में कॉन्फिडेंस इनकलकेट और उनको किस तरह का कम्युनिकेशन पब्लिक के साथ करना है. He had a historical mandate in his presidential election. So there are two ways of communication. Number one is a direct communication. If I'm a salesperson, if I ask somebody to buy my product or to increase my fees, it's a direct communication and it is negated by the conscious mind. But it is an indirect way. When you communicate with your clients in a subtle way, in an indirect way, you need to pass on a message that how hard you're working for that person, that your fees is required to be increased or you deserve this amount of fee. ये directly नहीं बोलना. जैसा मैंने कहा, I'm very active in social life for last 20 years and 70% of my clients are because of my connectivity with those social organizations, and I never pitched directly or indirectly. Rather, I did not pitch directly for giving me the work. I influenced them indirectly in a subtle way, because जब आप indirect message देते हो, that goes to subconscious mind, and subconscious mind receives everything. It does not negate any communication. So जब आप बात करें तो जो आपके मतलब की बात है उसको इनडायरेक्ट वे में दें, किसी मेटाफर के तौर पर दें, किसी इनडायरेक्ट एग्जाम्पल के तौर पर देंगे. इफ यू डू दैट, आई टेल यू,
your work will be done. The way these marketing companies release their advertisement, the way these sales people pitch for the sale of product, they never do that in a direct way, because they are told to influence your behavior in an indirect way. Direct होगा तो आप बोलोगे अरे यार ये तो मुझे बेचने की कोशिश कर रहा है, because he has a self interest. Okay, there's one more question. Most of the people around me are victim of my anger, and most of the time, immediately after reacting, I realize the same. How to tackle this attitude? Please suggest. Question by Kalpana Thakur. Kalpana ji, I would suggest I need to understand it. Like, I do not have a ready-made solution, because different people have different regions of anger. Different people have a different trigger points for anger. I need to speak to you 101. I need to understand the root cause of it. I need to understand the trigger point of it. Once I understand, it will take 30 to 45 minutes to remove this permanently. So that is possible. Good thing is you are recognizing the destructive behavior. That's very good. So that can be changed. But I need to speak to you 101 to understand the pattern behind it. So I have already shared my WhatsApp number. You can also contact me on Facebook or through YouTube. I have a YouTube channel, Preetham Kumar Goswami, and I'll definitely help you in case you contact me personally. Okay, one more question. How should we start interacting with the person with whom we had a bad past? Wonderful. Very good question. And I tell you, most people are not able to do that. You have to delete. देखो, bad past का मतलब ये नहीं है कि पूरा past bad था. There must have been one or two such incidences which created bad past. अभी किसी इंसान के बारे में पूछोगे ना क्या बुरा हुआ, तो एक या दो incidences होंगे. And those incidences are ingrained in your mind. And they are impacting your emotion. और जब भी उस इंसान का चेहरा आपके दिमाग में आता है, उसका थॉट दिमाग में आता है, you get disturbed. और सामने वो इंसान आएगा तो you get more disturbed, you know. So you are influenced by those thoughts. What you need to do, I said it yesterday also, I'm saying it today again, it is possible to apply Alt Control Delete in your mind also. You need to delete that memory. Okay. If you do it on your own, मेरे YouTube channel पर एक वीडियो है, how to delete those memory. If you follow that process, you'll be able to do that. If you're not able to do that, contact me, I'll help you doing that. But yes, and once that instance is deleted, then you will treat that person as normal as you do with others. And delete का मतलब ये नहीं कि वो instance आपको कभी याद नहीं आएगा. वो instance याद आएगा, लेकिन उससे जो जुड़े हुए emotional issues हैं वो disconnect हो जाएंगे. So even if that picture comes to your mind, you'll not be emotionally affected anymore. So that is very, मतलब ऐसे जो आपने ये problem बताया ना, I have cured at least 500 plus persons, गुस्से वाला और ये वाला, मतलब I have cured 500 plus persons in the last 10 years, and there were magical results, I tell you. Any other question? How to remain positive all the time? Question by Saurabh Sharma. ये मैं भी इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रहा हूँ. Even I don't feel positive all 24/7. So I'm also searching for it. But yes, I say that you practice spirituality, do a lot of workout and meditation. So if you do that, at least I am able to control my negativity through that. If someone behave nicely, but her reaction says something negative for you, so how can ignore such things? Question by Preeti. Okay. थोड़ा मेरे को एक क्वेश्चन से समझना पड़ेगा कि वो इंसान आपसे नाइस बिहेव कर रहा है, लेकिन वो नेगेटिव रिएक्शन कब आते हैं, कौन सी सिचुएशन में आते हैं. So my answer will not be able to solve your problem unless I understand that. But as I said, जैसे मैंने अभी एक मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ वाला एग्जांपल दिया था, ठीक उसी तरीके से you can do an activity which can stop disturbing you. So if that person behaves you nicely to you, you'll feel good. But if that person reacts, you'll not feel bad. That is possible. So you need to, but I need to understand the whole case. You can drop me a message with the complete detail.
then I'll try offering you the solution. But that's possible. Very easy thing to do. Within 30-40 minutes, it can be solved very easily. Okay. So you are very polite with your client. He became your friend also, having good family terms also. Now he has grown 50 times. Now he has changed totally, even not talking. One day he took all his files. Is it due to his ego? Is due to his wealth? There could be any other reason. कई बार क्या होता है, जो reason हमें समझ आते हैं, उसके दिमाग में वो reason हो सकता है. एक रीजन ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं पिछले 3, 4, 5, 6 years में उसको ऐसा लगा हो that you are not competent enough and you do not have that capacity to handle this much of magnitude in business. That is one possible thing. I don't think ego would be there. The only thing, in majority of cases, people change their CA only when they are not comfortable with the services or happy with the services. This is the one major reason. कई बार एक दूसरा रीजन भी हो सकता है कि हम कुछ बहुत जरूरत से ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए हों और उसको कोई सीक्रेसी मेंटेन करनी हो, वो आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर नहीं करना चाहता. दिस कुड बी वन रीजन. I do not deny ego to be one of the reasons. That could be the reason, but I will not be able to comment because it's a subjective question. But yes, majority of cases जब साइज बड़ा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो सीए तभी चेंज करेगा जब उसको कहीं ना कहीं लगता है कि आई नीड better services. In your case, what is the reason? I cannot comment on that, but ego could also be one of the reasons. But ego बहुत कम reason होता है. Of course, one-side expectations. A question है कि what if the expectations are one-sided, like something are always expected from you, but it's not vice versa. Of course, one-sided expectations are problematic. और वो भी problematic क्यों है? मैंने क्या कहा कि ठीक है, आपका जो धर्म है, आपका जो काम है, आपकी जो ड्यूटी है, आप उसे करते जाइए, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए. लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां आपको लगता है the other person is taking you for granted, that the other person must be felt realized that it is the relationship is a give and take relationship. Give and take. I first give and then I expect something out of it. So if it is one sided, it will not going to go longer way, and the other person must be given a chance to realize in an indirect way, not in a complaining way, not in a direct way, but उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली एहसास आपको कराना पड़ेगा कि वन वे रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, चाहे बॉस एम्प्लॉय की हो, क्लाइंट और सीए की हो, या हस्बैंड वाइफ की हो, या कोई और रिलेशनशिप हो, तो उसको आपको ये बताना पड़ेगा. तो चलिए, I got to go, so I request the moderator sir to take the charge. I have already shared my number with you, so in case any specific problem, if you want me to help you, I would be there, looking at my convenient time. So over to sir, Gaurav ji. Thank you so much, sir, for the wonderful session of today and answering one-to-one questions. Thank you so much, sir. So we end today's session, then we'll be going for tomorrow's day 3 session. Thank you, everyone. Thank you so much, Gaurav. Thank you, everyone. Thank you, Team ICAI. Thank you.